समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश दुनिया के प्रमुख समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। कार्यक्रम में खेल के मैदान की हलचल होगी, व्यापार जगत के उतार चढ़ाव पर भी रहेगी हमारी नजर और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अनीता आनंद। Hello Vishal, a very good afternoon to all our listeners. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Anita Anand and with me is Vishal Sharma presenting the program. We have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. And all this over the next 30 minutes. We begin the program with the news headlines first, Vishal. जी अनीता, सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। भारत राष्ट्र समिति MLC की कविता being questioned by ED for second consecutive day today in connection with Delhi excise policy scam. G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत दूसरी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक राजस्थान के उदयपुर में शुरू। Bharat Gaurav train for northeastern states to be flagged off from Delhi this afternoon. थाईलैंड नरेश ने मई में आम चुनाव से पहले संसद भंग की। And in sports, Bhopal is all set for a grand opening ceremony of ISSF Shooting World Cup this evening. And time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national level. Today's focus is on Bharat Gaurav train. Bharat Gaurav train meant for northeastern states from Delhi Safdarjung railway station, and it actually started its journey today. The Deluxe AC tourist train departed from Safdarjung station. It will cover Guwahati, Sivsagar, Furkating and Kaziranga in Assam, Unakoti, Agartala and Udaipur in Tripura, Dimapur and Kohima in Nagaland, and Shillong and Cherrapunji in Meghalaya in 15 days. Tourists can board and deboard at Ghaziabad, Aligarh, Tundla, Itawa, Kanpur and Lucknow stations. The train has 2 fine dining restaurants and a kitchen. The fully air-conditioned train provides 3 types of accommodation, that is AC first, AC 2 and AC third. The train has enhanced security features like CCTV cameras, electronic safes and dedicated security guards appointed for each coach. Vishal, Bharat Gaurav tourist train launch is in line with the government's initiative of Ek Bharat, Shresth Bharat and Dekho Apna Desh to promote domestic tourism. Talking to AIR News exclusively, Minister of State for Railways, Darshana Jardosh, said this step showed the commitment of the government to improve connectivity of the northeastern states. सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जो एक नया संकल्प किया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी भारत में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें इसके साथ जोड़ा जाए, और रेलवे जो था सबसे बड़ा उसमें बहुत कम काम हुआ था, तो इसी के ऊपर फोकस करके हम बार बार नॉर्थ ईस्ट को भारत से मुख्य स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज है जो संस्कृति से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक विरासत के साथ में 7 सिस्टर्स में जो भी काम हो रहा है वो स्टेट में, तो वहाँ पे अगर उनका एक गौरवशाली इतिहास बन जाए और उससे जुड़ी हुई ट्रेन आज रवाना हो रही है। Indian Railways has decided to operate Northeast Discovery beyond Guwahati, specially designed tour to cover the northeastern states of India by Bharat Gaurav Deluxe AC tourist train, which all the train tour starts from Delhi Safdarjung railway station and spanning over 14 nights and 15 days. The first stop of this train is Guwahati, where tourists will visit Kamakhya temple, followed by Umananda temple and a sunset cruise on the Brahmaputra. This train will further depart on overnight journey for Nahar Lagoon railway station, which is 30 kilometers from the next destination, which is Itanagar, the capital
of Arunachal Pradesh. The next city to follow is Shivsagar, the old capital of Ahom Kingdom in eastern part of Assam. The famous Shiv temple at Shivsagar, Shivadol, is part of the itinerary besides other heritage sites. Further, the tea gardens at Jorhat and an overnight stay at Kaziranga, followed by an early morning jungle safari at Kaziranga National Park, will be experienced by the tourists, Vishal. इसके बाद ये डीलक्स एसी पर्यटक रेलगाड़ी फोरकटिंग रेलवे स्टेशन से त्रिपुरा राज्य के लिए रवाना होगी, जहां प्रसिद्ध उज्जैन पैलेस सहित ऊनाकोटी और अगरतला के जाने माने विरासत स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। अगले दिन के यात्रा कार्यक्रम में उदयपुर के नीर महल पैलेस और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को शामिल किया जाएगा। ट्रेन त्रिपुरा का सफर पूरा करने के बाद नागालैंड राज्य का दौरा करने के लिए दीमापुर निकल जाएगी। बदरपुर स्टेशन से लुमडिंग जंक्शन के बीच की सुंदर रेल यात्रा को पर्यटक सुबह अपनी सीट से देख सकते हैं। दीमापुर स्टेशन से पर्यटकों को नागा जीवन शैली का अनुभव कराने के लिए खोनोमा गांव के दौरे सहित स्थानीय स्थलों पर पहुंचाने के लिए बसों द्वारा कोहिमा ले जाया जाएगा। टूरिस्ट ट्रेन का अगला पड़ाव गुवाहाटी होगा और पर्यटकों को सड़क मार्ग से मेघालय की राजधानी शिलांग ले जाया जाएगा, जहां रास्ते में शानदार उमियम झील पर एक पिट स्टॉप होगा। अगले दिन की शुरुआत पूर्वी खासी हिल्स में बसे चेरापूंजी के भ्रमण से होगी। शिलोंग पीक, एलिफेंट फॉल्स, नवखलिकाई फॉल्स और मावसुई गुफाएं दिन के समय घूमने वाले प्रमुख दर्शनीय स्थलों का हिस्सा हैं। चेरापूंजी से पर्यटक वापस गुवाहाटी स्टेशन पहुंच जाएंगे ताकि दिल्ली की वापसी के लिए ट्रेन में सवार हो सकें। इस पूरे भ्रमण में मेहमान रेलगाड़ी से करीब 5,800 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। That's amazing. And the modern Deluxe AC tourist train has a host of other amazing features, including 2 fine dining restaurants, a contemporary kitchen, shower cubicles in coaches, sensor-based washroom functions, foot massages, and a mini library. The fully air-conditioned train provides 3 types of accommodation, that is the AC first and AC second. The train has enhanced security features also, like we mentioned earlier, CCTV cameras, electronic safes, etc. And Bharat Gaurav tourist train launch is in line with the Government of India initiative Dekho Apna Desh to promote the tourism at a price range starting from a lakh and almost 7,000 rupees per person at AC 2 tier and 1,32,000 actually per person for AC first cabin and 1,50,000 per person for AC first class coupe. The IRCTC tourist train will be a 15 days all-inclusive tour package and the price will cover the train journey in respective class, night stay at AC hotels, all meals veg only, all transfer and sightseeing in buses. Travel insurance and services of the guides also will be provided. All necessary health precautionary measures will be taken care of and IRCTC will make efforts to provide a safe and memorable experience to the guests. Vishal. जी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होने वाला है जी। इस टूर के जरिए। देखो अपना देश जो Absolutely. उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे कि इस ट्रेन में जो है कोविड महामारी से बचाव के उपायों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मेहमानों के लिए पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य बनाया गया है। And to ensure the safety measures, full vaccination, like you mentioned, the double doses for guests of age group 18 and above is mandatory. Besides, IRCTC will also provide a safety kit to all tourists, which would include a face mask, hand gloves, and a sanitizer. Regular temperature checking of all tourists and staff, frequent train sanitization at hall stations, etc., and other precautions have also been adopted. And all staff shall be screened thoroughly, and kitchen and restaurants shall be sanitized after each and every meal service, which is again a very big measure and a difficult task, but it will be undertaken. In order to make this package more attractive and affordable to a large population, IRCTC has tied up with Paytm and Razorpay payment gateways to provide a EMI payment option for breaking the total payment in small amount EMIs. For more details, you can visit the IRCTC website www.irctctourism.com, and booking is available online on first come first served basis on the web portal.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या उनके पास आज विशेष समाचार है उनके क्षेत्रों से। G. Vishal, and we will talk about the northeastern states. Our journey of Parikrama also begins with the state of Mizoram. It being a hilly state, is prone to natural calamities like landslides, being the most followed, and this is followed by the forest fire and also the earthquakes. The state has witnessed massive forest fires in the last 2 years. Also, the state's Champhai district has suffered with hundreds of mild and medium tremors in the last 2 years. At this backdrop, talks of the seismic zone 5 pointing to major earthquakes in the coming days creep into the public sphere. Notably, the entire northeast region, including Mizoram, is situated in the seismic zone 5. So it is apprehended that there is a possibility of earthquakes in the region, which is a constant threat. It seems, according to the officials of the Mizoram State Disaster Management Authority, the possibility of major quakes surely is there, but no one can predict the time or the magnitude. The State Disaster Management Authority and its personnel have so far tackled many disastrous situations, and they have said the department is prepared to face any situation in the coming days. Also, more from our correspondent. Mizoram witnessed massive forest fires in the last 2 years. Southern district Champhai suffered with hundreds of mild and medium tremors 2 years back. Pointing to all this, many people expressed their concern, citing the fact that the state and the region as well is seated at the most earthquake-prone area, seismic zone 5. Officials of the Mizoram State Disaster Management Authority opined that instead of suffering from fear and anxiousness, it would be better to take precautionary measures and build up positive awareness among the people. Talking to AIR News, Deputy Director Training of the State Disaster Management and Rehabilitation Department, Dr. Roki Matenkwal, said they are equipped with resources and impart training to their personnel and also go for awareness drives on a regular basis. He said the department is enriching its resources with kits and tools in compliance with the policy, programs, and guidelines of the National Disaster Management Authority. Dr. Laroki Matenkwal further said, I like to point out that Mizoram is vulnerable to various hazards like landslides, earthquake, cyclone, river run floods, and other natural hazards. Landslide is the most common hazard occurring very frequently. Every year, number of landslides occurring here and there, disrupting communication lines and collapsing of buildings and causing life and injuries to many people. And we all know that Mizoram is lying in seismic zone 5 of Indian seismic zonations. But earthquake can strike anytime, but at the present knowledge of science and technology, we cannot predict the earthquake, the dates, the timing, and the magnitude cannot be predicted. So we are very sad to learn that some people are predicting earthquakes in the near future. But we have to send a message to the people that we cannot predict the earthquakes, the dates, the timing, and the magnitude. We have to convince and we have to sensitize the people that earthquake cannot be predicted. As per the norms prepared by Government of India and Ministry of Home Affairs, we have State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund available with us. So whenever disaster strikes, some people lost their life, and whenever they suffer injuries, and whenever they lost their property, we are giving immediate relief to the people who suffer the hazards. According to the officials, Department of Disaster Management conducts state and district-wise mock drills periodically, which is also conducted at individual institutions and government offices every now and then. Dr. Laroki Matenkwal said these mock drills have always drawn good responses from people and helped the department to work out for more effective solutions in the time of need. For Parikrama, this is Irene from Aizawl. Today is the International Day of Forests, also known as World Forest Day, celebrated each year on this day to raise awareness about the importance of forests and trees for the survival of humanity and the planet. Forests are crucial, Vishal, for our ecosystem and also our survival, and it regulates the climate, purifies the air, water, and provides food and medicines and other resources also to us. जी, right, Vishal? और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर हम चलेंगे गुजरात के कच्छ जिले के एक छोटे से गांव की ओर, जहां हम गांव की आबादी और पेड़ों के बीच की चुनाव की बात आए तो 100% पेड़ों की ही जीत होगी, क्योंकि इस गांव में इंसानों की आबादी से ज्यादा वृक्ष हैं
कच्छ के मुख्यालय भुज से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये जियापार गांव है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट, आइए सुनते हैं। 2001 के विनाशकारी भूकंप ने जियापार गांव को भारी नुकसान पहुंचा था, बट बीएपीए संस्था द्वारा नया नारायण नगर जियापार बनाया गया। उस समय रावजी भाई पोकर ने गांव के जीर्णोद्धार के साथ साथ नंद नवन बनाने का बीड़ा उठाया। उनके नेतृत्व में लक्ष्मी नारायण सनातन युवक मंडल ने पौधारोपण का निर्णय लिया। देखते ही देखते वृक्ष प्रेमी रावजी भाई की बात को समर्थन मिला और 1 या 500 नहीं बल्कि 7,000 से अधिक पौधे रोपे गए। जब तक पेड़ एक निश्चित ऊंचाई तक नहीं बढ़ जाता है, तब तक सोना मना है। आज 5 साल से अपने और अपनी मंडली के प्रयास से जियापार गांव पेड़ों से ढका हुआ है। गांव की आबादी 1700 है और 7,000 से अधिक पेड़ है। सीमेंट के प्लास्टर के दोनों ओर नीम के पेड़ सुशोभित है। इस गांव में प्रवेश करने पर जंगल से गुजरने का आभास होता है। गांव तक पौधे पहुंचाने में बाबू भाई चोपड़ा ने सहयोग किया तो रवि भाई नमोरी, वसंत भाई चोपड़ा, चमन भाई चोपड़ा और गाँव के वृक्ष प्रेमियों का सहयोग मिला। अमृतलाल लथा भाई के नेतृत्व में लक्ष्मी नारायण सनातन समाज युवक मंडल की देखरेख में पेड़ों के फेंसिंग कवर के साथ साथ 1000 पेड़ों का एक अलग पूरा प्लॉट भी बनाया गया। इसके बारे में बात करते हुए रवि भाई नमोरी ने इस प्रकार कहा। मैं कच्छ जिले के नखत्राणा तहसील के जियापुर गांव का रवि गरवा हूँ। हमारे गांव के अंदर 2001 के भूकंप के समय के अंदर पूरा हमारा गांव ध्वस्त हो गया था। इस गांव को बीएसपी संस्था पूरा इस गांव को दत्तक लिया और पूरा गांव को 285 मकान हमारे जियापुर गांव में बनाए और नई जगह पे ये गांव निर्माण हुआ। इस गांव का नया नाम नारायण नगर रखा गया और इस गांव का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी देश के स्वप्नशील बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2003 में किया था। हमारे गांव की 1500 बस्ती है। 1500 बस्ती के अंदर 7,000 से ज्यादा वृक्षों हम लगाए हुए हैं और पूरी 5 साल हम इस वृक्षों को मेहनत किया और आज गांव में हम जाते हैं तो शासन गिर में जैसे आप घूमने के लिए जाते हैं, जैसा आह्लादक वातावरण बनता है और हम देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब की बहुत वृक्षों से प्रेम है, वो विषय को लेकर हमने हमारे गांव में वृक्षों में बहुत मेहनत की है। धन्यवाद। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड। And just to remind our listeners that this day, that is the International Day of Forests, provides an opportunity to celebrate the beauty and diversity of world's forests and to recognize the important role they play in our lives. The theme for this day changes every year with the aim of highlighting different aspects of forest conservation and management. The theme for this year is Forests and Health. And now we'll take you on a tour around India's freedom struggle and recall the events that happened on this day. On the 21st of March 1858, the British were able to break the siege of Lucknow during the First War of Indian Independence. Freedom fighter Ahmadullah Shah and his 1,200 soldiers were driven from a fortified house in the centre of the city. With this last siege, the British successfully destroyed the organised freedom struggle in the kingdom of Awadh. Awadh had been annexed by the East India Company in 1856. When the First War of Independence started in May 1857, it threatened British authority in several areas of India, but most particularly in Awadh, where the dispossessed rulers and landowners joined with the mutinied regiments. In Lucknow, from the 1st of July to the 26th of November 1857, the British withstood the siege of the Residency to the north of the city. During the winter, the British re-established communications with Delhi and with Calcutta. They also received fresh reinforcements from Britain and built up a substantial transport and supply column. On the 11th of March 1858, there was severe fighting for the Begum Koti, in which 700 freedom fighters died. The Kaiserbagh area was captured on the 14th of March, but its defenders were able to retreat without difficulty. On the 16th of March 1858, the British stormed the Residency and Begum Hazrat Mahal and her son Birjis Qadr were driven from the palace. The last rebels were driven from a fortified house in the centre of the city on the 21st of March, and the British declared the city clear of activists. We also remember revolutionary freedom fighter Prafulla Nalini Brahmo,
who was arrested by the British police on the 21st of March 1932 in connection with the murder of the British official Stevens. Prafulla was born in 1914 at the village of Comilla, now in Bangladesh. She was the daughter of nationalist, lawyer Rajanikanta Brahmo, who gave up his job during the civil disobedience movement 1930. Prafulla was the first girl to be recruited for the Jugantar group of Comilla after a lengthy discussion with Akhil Nandi. Prafulla convinced Nandi of her willingness and ability to do revolutionary work and was assigned the task to organize the women's wing of the revolutionary group in the district. Prafulla immediately proved her competence by recruiting her schoolmates Shanti Ghosh and Suniti Chaudhary, who later became famous revolutionaries. Then, to expand the women's wing of the Jugantar group of Comilla, Tripura District Women Students Organization was formed with Prafulla as president and Shanti as a secretary. After being arrested for the murder of Stevens, Prafulla was detained in Comilla jail. She was made a detainee due to lack of evidence. On the 30th of May 1932, she was transported to Hijli jail. In April 1936, she was released and interned in her own house at Comilla. During the internment, she became a victim of appendicitis. According to rules, an internee could consult a doctor only after securing the permission of the local police officer. This system was inconvenient for a patient as the officer was not always easily available. This actually happened in Prafulla's case. By the time her father could bring a doctor with the permission of the police, Prafulla died on the 22nd of February 1937. We salute the great freedom fighter. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. और अब कारोबार जगत की क्या खबरें हैं आपके पास अनीता? The key domestic share markets today posted gains of more than 0.5%. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above 58,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange ended above 17,000 level. Both indices rose amid positive global cues. The Sensex climbed 446 points to finish at 58,075. The Nifty also surged 119 points to settle at 17,108. At the forex market, the rupee settled at 82 rupees and 67 paise against the US dollar. At the multi-commodity exchange, gold futures for April contracts were trading at 59,230 rupees per 10 grams. Silver futures for May was trading at 68,800 rupees per kilogram when the reports last came in, and in the intra-day trade, Brent crude was trading at $74.80 per barrel. और अब चलते हैं खेलों की दुनिया की ओर और जानते हैं वहाँ क्या हलचल है। In the 2023 Swiss Open Badminton Tournament at Basel, Switzerland today, the tournament will be played till 26th of this month. Vishal and Indian shuttler PV Sindhu will begin her campaign against the local wildcard Jansira Stadelmann. Sindhu could face Saina Nehwal also in the second round if the latter manages to get past the Thai shuttler Lalindra Chaiwan in her tournament opener. In the men's singles, HS Prannoy will face China's Shi Yu Chi in his opening round fixture, while Lakshya Sen takes on Lee Choo Kyu of Hong Kong, and former silver medalist Kidambi Srikanth will be up against China's Wang Hongyan in their first round matches. And today, Vishal, is the World Down Syndrome Day. Observed every year on 21st of March. It's a global campaign which is observed annually to spread awareness about the Down syndrome. The day helps educate the public on what Down syndrome is and how to encourage those with the syndrome to participate in daily activities so that they can live a full life and play a vital role in their community. On the occasion, National Gallery of Modern Art, Vishal, that is NGMA, is organizing a painting and pottery workshop today. World Down Syndrome is officially observed by the UN since 2012. और आज अनीता विश्व कठपुतली दिवस भी है। हर साल 21 मार्च को इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कठपुतली को वैश्विक कला के रूप में मान्यता देना है। ये दुनिया भर के कठपुतली कलाकारों का सम्मान करने का एक प्रयास भी है। एक समय कठपुतली को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम समझा जाता था। आज
कठपुतली कला मनोरंजन के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। राजस्थान की स्ट्रिंग कठपुतलियां दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कठपुतलियों की यही कला प्रचलित है। राजस्थानी कठपुतलियों की अगर हम बात करें तो उनका ओवल चेहरा, बड़ी आंखें, धनुषाकार भौहें और बड़े होठ इन्हें अलग पहचान देते हैं। Absolutely, Vishal, and many Indian classical texts like Ramayana and Mahabharata also mention puppets, don't they? China, Japan and Taiwan also have had their versions of puppetry. Today is also the World Poetry Day, celebrated on 21st of March, declared by UNESCO in 1999 with the aim of supporting linguistic diversity through poetic expression and increasing the opportunity for endangered languages to be heard. जी, और कविता रचनात्मकता से जुड़ा क्षेत्र है, इसलिए इस दिन सरकारी संस्थाएं, शिक्षक, सामुदायिक समूह और व्यक्तिगत रूप से कविता लेखन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन करते हैं। विश्व कविता दिवस एक ऐसा अवसर है जहां पर बच्चों को स्कूल की कक्षा में कविताओं से परिचित कराया जाता है, और ये एक ऐसा मौका भी है जहां कवि न केवल अपनी भाषा की भव्यता से लोगों को परिचित कराता है, बल्कि अपनी कविता की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। और अब समय है कार्यक्रम में उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले अगर हम पुण्यतिथि की बात करें तो आज पुण्यतिथि है मेजर मोहित शर्मा की। भारतीय सेना के अधिकारी थे, इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण है ये। मेजर शर्मा एलीट 1 पैरा एसएफ में से थे। वे 21 मार्च 2009 को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। मेजर मोहित शर्मा ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे और एक पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो थे। Today is the birth anniversary of Ustad Bismillah Khan, also the Shehnai player. We can't remember an occasion on DD radio without his, especially on 26th of January, special occasions. जी, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिस्मिल्लाह खान ने क्लासिकल मौसीकी में शहनाई को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया, और जैसा कि आपने कहा कि भारत की आज़ादी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का एक खास रिश्ता भी रहा है। बिस्मिल्लाह खान साहब ने कई फिल्मों में भी संगीत दिया। इन्होंने कन्नड़ फिल्म सन्नादी अपन्ना, हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई और सत्यजीत रे की फिल्म जल सागर में के लिए शहनाई की छड़ी। आखिरी बार इन्होंने आशुतोष गोवारिकर की हिंदी फिल्म स्वदेश के गीत ये जो देश है तेरा में शहनाई की मधुर तान बिखेरी थी। He was awarded the Bharat Ratna in 2001. और आज ही के दिन जन्म हुआ था खुर्शीद अनवर का मियांवाली में, पंजाब, जो मौजूदा पाकिस्तान में है। खुर्शीद अनवर ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के संगीत विभाग में प्रोड्यूसर इंचार्ज की हैसियत से की थी। फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में पहली बार उन्होंने पंजाबी फिल्म कुड़माई में सन 1941 में संगीत दिया था। इनके मधुर संगीत से सजी पहली हिंदी फिल्म थी इशारा, जो सन 1943 में प्रदर्शित हुई थी। आइए सुनते हैं उनकी इस फिल्म का ये गीत। And now for birthdays, today is Rani Mukherjee's birthday, the actress known for films like Kabhi Alvida Na Kehna, Chalte Chalte, Hum Tum, Veer Zara, Bunty और बबली। अब medley। क्या बोलती तू क्या मैं बोलूं, सुना आती क्या खंडाला क्या करूं, आगे में खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं, आगे में खंडाला, अरे घूमेंगे। Well, we could play just one song because today is also the birthday of the Marathi Indian actress Kanan Kaushal. We've known her, actually know her from the film Jai Santoshima, released in 75, a bhajan picturized on her. मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। और अब श्रोताओं, समय हो चला है आपसे यही अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए विशाल और अनीता आनंद को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार। नमस्कार।